181.617 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि अभी आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग के जरिए उसी तरह की उन्हीं घटनाओं की याद दिलाई जाए ताकि हम यहाँ से और आगे बढ़ सकें। इस समय हम करीब करीब 11 मिनट की दूरी पर ये एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग आपके लिए, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आपको याद दिला सकें कि कैसा था वो प्रक्षेपण। We have the view of the Mission Control Center at the Mission Operation Complex. By 39,000 kilometers around the Earth. So once the orbit of the Chandrayan 2 was 39,000 kilometers with a perigee of 170, as you can see on your screen, using its propulsion system, it performed 4 earthbound maneuvers to raise the orbital altitudes in preparation to enter the lunar transfer trajectory and then go to the lunar orbit. So right now what you're seeing is the orbit of Chandrayan 2 being raised around the Earth, and once this is done, the spacecraft has entered the lunar transfer trajectory phase and it is proceeding towards the moon's orbit, and very shortly you will see the Chandrayan 2 spacecraft has been captured in the sphere of influence around the moon, and it will start orbiting with an altitude of almost 18,000 kilometers by 120 kilometers, and then subsequently using the propulsion system of the Chandrayan 2, which is the orbiter module, the orbit was brought down to an altitude of almost 100 kilometers. In the process of bringing it down from 18,000 to 100 kilometers around the moon, it performed nearly 4 orbital descent maneuvers, and you can see now the orbiter and the lander Vikram will get separated, and eventually the Vikram lander module, using its propulsion system, has brought down the altitude to something like 30 kilometers by 100 kilometers. So as I have mentioned repeatedly, the Vikram lander module is presently in an orbit of around 30 kilometers by 100 kilometers. 30 kilometers is the minimum height above the lunar surface where the powered descent operations will be starting, and I think we are very close to the event when the Vikram lander thruster will be initiated. Roughly around 6 minutes to go before we start the powered descent operations. जी हाँ, हम करीब करीब 7 मिनट की दूरी पर जहाँ से डिसेंट शुरू होना है, जहाँ से उस घड़ी की शुरुआत होगी जब हम लगभग 35 किलोमीटर की पेरिजी की ऊंचाई से हम उतरना शुरू करेंगे। जिन दर्शकों ने अब इस अभियान को शुरू से फॉलो नहीं किया है, उनकी जानकारी के लिए संक्षेप में बता दूं कि प्रक्षेपण के पश्चात 24, 25, 29 जुलाई और 6-8 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा में 5 मैन्यूवर्स किए गए, जिसमें तकरीबन 508.4 किलोग्राम प्रणोदक का कुल 3604.254 सेकंड तक प्रज्वलित कर कक्षीय परिवर्तन किया गया, जहां कक्षा उत्थान किया गया। इसके पश्चात 13 अगस्त को ट्रांस लूनर इंजेक्शन TLI के दौरान 166.8 किलोग्राम प्रणोदक की खपत कर
.309 मीटर प्रति सेकंड की वेग वृद्धि की गई और चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर मिशन के लंबे अतिपर्वणीय पथ पर एक ऐसा बिंदु आता है जो चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र के अंदर होता है। इसे लूनर ऑर्बिटल इंसर्शन या LOI कहते हैं और इसी बिंदु पर भू आदेश के द्वारा कक्षा की दिशा में परिवर्तन कर उसे चंद्रमा की दीर्घवृत्तीय कक्षा में पहुंचा दिया जाता है। फिर 20, 21, 28, 30 अगस्त और 1 सितंबर को 745.04 किलोग्राम प्रणोदक को कुल 4422.8096 सेकंड तक प्रज्वलित कर चंद्रमा की निम्न कक्षा में प्रवेश करा दिया गया। इस समय पेरिलुइन लगभग 120.5 किलोमीटर और एपोलुइन 126.1 किलोमीटर प्राप्त कर लिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर इसरो उपग्रह केंद्र के UR राव उपग्रह केंद्र के विभिन्न वरिष्ठ वैज्ञानिकों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हुए देख पा रहे हैं, क्योंकि इस समय हम केवल 5 मिनट की दूरी पर हैं और हर छोटी बड़ी घटनाएं जो भी इस समय लगातार घट रही हैं उनका बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। और जिस समय हम करीब 1:38 सुबह के हम चंद्रमा के उस बिंदु पे पहुंचेंगे जहां ऊंचाई करीब 35 किलोमीटर होगी, उसी क्षण में ऑर्बिटर भी जो होगा वो बिल्कुल उपग्रह के ऊपर होगा, इस तरह से ताकि हम उसके चित्र प्राप्त कर सकें। So minus 3 minutes 53 seconds before we start the power descent operation. Just to give a quick update on the way the total power descent operation for the Vikram lander would be carried out. The descent operation would, as you can see on the screen, we are at 3 minutes to go before we start these operations. So Vikram lander would commence from an all-terminal descent phase where the Vikram lander will be brought from an altitude of 400 meters to 100 meters to 60 meters to 10 meters and finally the touchdown. So as we go through these operations, as I mentioned, it will be a 15 minutes of descent operation. Once the activity is initiated, we will be bringing you some of the flight parameters and the status, how the total operations are going on. So each of these phases during the power descent are very critical and important in its own way, as it has a very specific objective and the goals to be achieved during this entire phase of operations. So maybe another 1 minute, 19 seconds to go. The further update as far as the descent operation is concerned, the Vikram lander has 4 main propulsion engines, each generating a thrust of nearly 800 newtons, and out of these 5 main engines, the 4 engines are throttleable liquid engines, which means we will be able to regulate the thrust of the engine, like increasing the speed or decreasing the speed of the engine to achieve the required deboost velocity. Another 48 seconds to go before this deboost or firing of the engines. The 4 thruster engine, throttleable engines are carried out. जी हाँ, थोड़े तनाव भरे क्षण जरूर हैं, क्योंकि हम बेहद करीब 32 सेकंड के जब विक्रम को धीरे धीरे उतारा जाएगा नीचे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे उतरते समय उसके वेग मान को कम किया जा सके, जिसे हम रफ ब्रेकिंग फेज कह सकते हैं। और इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान हम जो उसमें लगे हुए 8 थ्रॉटलेबल इंजन हैं, जिससे उसके प्रणोद बल को कम किया जा सकेगा। ऐसे 4 इंजन 4 कॉर्नर पे लगे हुए हैं, 4 कोनों पे लगे हुए हैं, और ऐसा ही एक 800 न्यूटन का इंजन जो है बीच में लगा हुआ। और बिल्कुल हम करीब इस समय विक्रम डिसेंट के स्टार्ट कर दिया गया है, और रफ ब्रेकिंग जो वो है घड़ी है वो बहुत ही नज़दीक होगी। इस समय हम धीरे धीरे अब उसकी गति को कम करना शुरू करेंगे। Yes, the descent phase of operation for the Vikram lander has just been initiated with the firing of the 4 liquid engines, which I was mentioning, the 4 throttle engines. The activity has just started, and right now we are at 35 seconds since the engines have fired. And just to give an update, the Vikram lander, when it was in an orbit of around